Welcome back to the another live stream of Hogwarts Legacy। तो लास्ट टाइम हमने एक बीस्ट को टेम करना सीखा था कि कैसे क्या टेम करते हैं उसे थोड़ा बहुत। और हम उसके साथ गए थे वो ट्रांस का क्या नाम था, सेडीना मेडीना कुछ नाम था ना उसका। कुछ एक क्विज किया था ये जिसमें आ, एक वो था, क्या कहते हैं उससे, अरे वो क्या कहते हैं यार उसे, उसका नाम क्या था एक गॉब्लिन था उसमें। और लास्ट टाइम हम ट्रेजर ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ट्रेजर तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश, वो कैंडल वाली लोकेशन कहाँ है, तो लास्ट मुझे मिल ही गई वो कैंडल वाली लोकेशन। तो देखो मैप के हिसाब से ये है वो लोकेशन कि यहाँ फॉरेस्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं लूमोस यहाँ पे Lumos. ऑन करता हूँ ना तो तुम देखो Enchanted candles. इंचांटेड Wonder कैंडल्स where they're रिवील होती, heading. ठीक है। एक लव लेटर भी रखा है ये, तो इंचांटेड कैंडल हमें कहीं ले जा रही हैं। The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. देखो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो वहाँ जाएंगी, तो वहाँ जाना है बेटे। कहाँ, यहाँ? Boy, you know how to make a girl cry. You make me so hard. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden ये Forest रहा। could seem romantic to some. भाई इधर तो कैंडल ही कैंडल है सारी इंसान। Treasure hunting suits me. हो गया भाई यार। इसी के साथ घोस्ट ऑफ आवर लव करके जो था ना अपन ने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे ट्रेजर हंटिंग वाले कॉस्ट जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, हमने मतलब लास्ट टाइम वो पेड़ वगैरह उगा रहे थे ना हम प्रोफेसर गार्लिक की क्लास करने के लिए। तो एक हमारा है कि यूज़ दैट, कि इन पेड़ों को किसी बैटल में तीनों पेड़ों को एक साथ यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँ, एक आध कैंप ढूंढ ले रहा हूँ जहाँ पे मैं सब बकचोदी कर पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पास तो ये दिख रहा है, यहाँ पे जाके इनसे लड़ूंगा भाई, जाके ब्रूम निकाल लूँ मैं मेरी। You make me so hot. ओके यही है ना। If the air is cool, it always takes longer. ठीक है, तो मैं एक बार प्रोफेसर गार्लिक का और देख ले रहा हूँ कि मतलब और क्या क्या करना था। उसके बाद अपन मैन को से करेंगे, ज़्यादा वो नहीं करूँगा मैं, ठीक है। मैन ही अपने मैन है। ग्रो एंड हार्वेस्ट, हाँ। एक्वायर ऑल 3 कॉम्बैट प्लांट्स एंड यूज देम साइमल्टेनियसली। ठीक है। ठीक है, ये रहा एक कैबेज यूज करनी। Afraid to take a hit, are you? ठीक है, और एक आखिरी वाला रहा। और इसी के साथ ये हो चुका है अपना, लेकिन इनको मैं मार के भी चलूं। निरस्त बाबा डाल दो। I hope you. Confringo. You will fall! Glacius. Confringo. Protego. ओके, इस पर मुझे अपना एनिसेट मैजिक यूज करना पड़ा है। अरे तो 20 बन रहे हैं। Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Glacius. Confringo. ठीक है, For me. Predictable. Productive. ओह नाइस।
I mean nice. Glaciers. Glaciers. भाई ये तो फिर से बन जाती है यार, इसका कोई तोड़ नहीं है क्या? Glaciers. Confringo. Expelliarmus. Glaciers. Oh, this is You've always liked a pulp like that. ये तो बहुत बेकार है, नहीं खाई हुआ यार फिर। putting me to sleep. Pathetic. Glaciers. Is that the best you can do? So close. Nice try. Oh no. Let's play predator and prey, shall we? अरे यार ये फिर बुल बन गई। जाओ पहले इसको थोड़े ग्राउंड में लाओ। आजा। Glaciers. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Protego. I thought you'd at least hold your own. Projector! You regret that, my boy. ये भाई फिर बन गया यार। Glaciers. Confringo. Expelliarmus. एक काम करो, वो कौन सा लेवियोसा कौन सा था, इसको रखो इसकी जगह। Protego. एंसेंट मैजिक यूज कर लो ना। Glaciers. Having the barrier! You don't want to try that again. It's the student बेकार who है भैया। released Treadwell. मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा अब। हाँ, restart from last checkpoint. Boy, you know how to make a girl cry. You make me so hot. You make me so... Okay, okay. Stop! Confringo! No! Confringo. Protego. Marvelous! Slippery little Incendio. break up. Glaciers. Confringo. Expelliarmus. Ricky, little cape flapper! Glaciers. Confringo. Expelliarmus. What have you done? Glaciers. Confringo. Protego. Stupefy. Okay. Your poaching days are over. भाई साहब तगड़ी फाइट थी भाई ये। असल में वही लड़की बस तगड़ी थी, उस पे अगर उस पे एंशिएंट मैजिक यूज करना था शुरू से ही, तो लेवियोसा भी यूज नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या था क्या था। Revelio.
डाल दिया। कलेक्शन अपडेट वेनम 2, कुछ वेनम 3 मिला है ना। आई थिंक दिस कैंप इज क्लियर नाउ। ये तो साइड मिशन था जो मैं कर रहा था, बट मैंने कहा ठीक है। तो हम वो प्रोफेसर गार्लिक वाला मिशन भी अब कर सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बोल रहा था कि ये वाला प्रोफेसर गार्लिक वाला यूज देम साइमल्टेनियसली, ये तो किया ही नहीं मैंने, यार भूल गया था। सॉरी गाइस, मैं यहाँ चल जाता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ वो, क्योंकि वो राष्ट्रीय चेक पॉइंट से वो होता है ना। Your poaching days are over। क्या मस्त बोलता है भाई वो। रुक जा भाई रुक जा, सबसे पहले ही यूज करना है टैब, फिर ये और फिर उसके बाद देखिए हो गया। अब इनको भी नहीं, अब इनको नहीं मार रहा यार, हो गया भाई। अब वैसे ही बोर हो जाएंगे, इनको शायद मिशन बाद में करेंगे। अच्छा एक स्पाइडर शायद मर गई ऑटोमेटिक, वो प्लांट से। You make me so hard। प्रोफेसर गार्लिक की क्लास देख लेते भाई। ये रहा भाई प्रोफेसर गार्लिक, रही सब हिंदी। ये रहा ये क्लास का गेट, और ये हम फाइनली पहुंच गए। अरे एक और गेट है, 4 गेट क्यों लगाते हैं। ओए मैं 2 बार जा चुका उसी रूम में। अरे मेरे को लगा यहाँ से भी रास्ता होगा, मैं भोला वाला इंसान, मुझे क्या पता। ठीक है, hey Garlic। I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. ठीक है, You मैं will अपने want को to नया स्पेल focus with सिखा this रही। spell. Nothing as Flipendo. mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. ऐसा है वो, सॉरी। Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so. कौन सा फ्लिपेंडो ये? Greenhouse. Just mind the plants, please. Flipendo! Look at that. You're a natural. ये फ्लिप कर देता है ना सबको, ये फ्लिप करके पीछे पड़ जाए। The knockback jinx Flipendo like SU is a force spell capable of dispelling violet seed charms by Flipendo। ठीक है, समझ गया। Professor Garlic,
a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. ठीक है. What made you want to teach? I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. That's almost comical. A fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula, and his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad things work out as they did. I feel sorry for the phone. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. ठीक है sir. ठीक है. I be kind. Flipendo. Flipendo! Nice spell I got here. Okay, next. ठीक है. The next quest is this one. कहाँ गया? Catch in the castle. तो इसके लिए हमें आर्थर से जाके मिलना है. So वो रहता है आर्थर मोस्टली, जहाँ तक मुझे पता है वो एस्ट्रोनॉमी विंग का लड़का है. ये रहा एस्ट्रोनॉमी विंग में. तो एस्ट्रोनॉमी विंग चलते एक बार. You make me so hard. You make me so cold. That wasn't love. That was hope. Good fun. Now that I know, that wasn't love. That wasn't love. That was just hope. ठीक है भाई, समझ गया. तुम इतने देर लोड करोगे, समझ गया मैं. I've always said that travel broadens the mind. ये तो शायद है ना. नहीं यार, ये नहीं है. हाँ. अब मैं भी भूल गया यार वो. आर्थर. Requirement. क्या निकलता हुआ है? ये एस्ट्रोनॉमी क्लास है ना. बढ़िया है भाई एस्ट्रोनॉमी क्लास भी. ये अपनी होगी कब? चलो गाइस, आर्थर तो मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा अब?
My mother sent me. मैन कोस्ट करेंगे अपने, ठीक है। ये सब अपन बाद में इतने कर तो लिए भाई, दो दो, ठीक है। तो मैन कोस्ट है द कैट चेकर्स लूनर्स लेमेंट एलोहोमोरा करके, हमें एक स्पेल भी मिलेगा। इसको लोकेट करते हैं मैप में, इट इज़। तो इसके लिए हमें जाना है ग्रैंड स्टेयरकेस में, ठीक है। तो मैप देखो, तो हम सबसे पास वाले उस पर ट्रैवल कर लेते हैं। To doubt one of. There wasn't love, there was just hope. लोडिंग स्क्रीन बहुत है थोड़ी, स्लिदरीन का लोगो आ जाता है बस वो देख के खुश हुआ तो, सॉरी। नाइस, टॉक टू द ग्लेडिंग मून। ओई, एल्डर रिंग के करेक्टर्स इधर क्या कर रहे हैं? ओह, these stairs always got me. मतलब पता है कि हाँ ये जादू ही है, आराम निकलेंगी, लेकिन फिर भी ये देखो, ये कुछ तो है यार। अरे वाह, ये लिटिल डिटेल। Revelio. ओए, How nice to see you, my young friend. what is this bro? ना होगा कुछ वो, अभी मैं तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ इस पे। There wasn't love, there was just hope. चारों हाउस के वो हैं वो वहाँ पे। Revelio. फिर हमें ताला खोलना सीख जाएंगे मेरे हिसाब से, अलोहामोरा करके जो स्पेल मिलेगा तो। क्यों गाइस, मेरे को ये बताइए आप, Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. Glacius. ये लौंडा जो है ऐसे बॉल लेकर खड़ा है, ठीक है। इसका क्या पजल हो सकती है देखना। और ये कितना है? ईगल, ईगल हो सकता है 1 2 3, मे बी 3 होगा ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे गिनूं, हाँ 3 होगा, क्योंकि देखना अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ही कुछ होगा मेरे हिसाब से। 3, हाँ तो 3 यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, 1। अच्छा, होगा भाई कुछ। चलो, यो ग्लेडविन मून। Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. Thank you. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. ठीक है भाई। I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Yes. Watch what happens when that light changes from day to night. अब रात भर इंतजार करवाएगा अपने को ये। ओह, सीन अच्छा था। रात हो गई तो क्या हुआ इसमें? Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment,
See if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. तो यहाँ जैसी वैसी स्टैचूज रहेंगी तो वो सिर्फ रात में ही गायब हो सकती है वैसे ना. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. ग्रैंड स्टेयरकेस देख लो भाई. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and rebel themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. बहुत बोलते हैं यार. ठीक है. I don't want to get in trouble. What is it for me? Happy to help. I'd be glad to help you, प्रोफेसर से Mr. कभी Moon. पंगे नहीं I लेते. knew I मार्क्स could कट कर count देंगे on नहीं तो. you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? अब नया स्पेल सीखेंगे भाई अपन. Tosh! Hello, I Mara. sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. चलो ये रहा एलोमोरा. ऐसे करते हैं इसको ऐसे. एक स्पेल कुछ ऐसा भी था जिसको अपन ऐसे करते थे. ऐसे. मेरे को पता कौन सा था भाई ये. इससे कोई भी लॉक खोल सकते हैं अपन. तो जैसे ये वाला लॉक है आपको दिख रहा है. इसको खोलना है मेरे को. तो मुझे बस इसको इसमें एलोमोरा के यूज करना है. एलोमोरा, वेयर इज एलोमोरा? क्रूशियो, डिफेंडो, बॉम्बार्डो, ट्रांसफॉर्मेशन. इतने ही है बस. आवरा कटावरा नहीं है वो. एब्रेकेडेब्रा. एलोमोरा कहाँ गया भाई? क्या आपको एलोमोरा दिख रहा है? ये तो नहीं है. विंगेरियम लेवियोसा. मैं क्या देखने लग गया. देखो उसमें
आई थिंक एलो मेरा इधर ही होगा। हाँ मतलब ऑटोमेटिक यूज होगा उसका। Aloha Mora. अलोहा मोरा। यूज की यू क्यू ई एंड ए डी। अच्छा क्यू ई ए। ठीक है ये रहा। खुल गया। use QEAD to move the spark and rotate the dice until both corresponding gears are activated to release the lock. ठीक है। नाइस इजी था ये भी। Well done! You're in! धन्यवाद। Remember, use a disillusionment. Aloha Mora. चलो ठीक है। देख रहा है तुम? Revelio. सिरोना ने लिखा ये। My dear Dot has been asking after you. Perhaps I can convince her for जाना तो वहाँ है, लेकिन यहाँ पे भी एक दिख तो रहा है। खुल जाएगा। Revelio. अब तो हम यार हर रूम में घुस पा रहे हैं फिर तो। यहाँ पे और कुछ नहीं छुपा? नहीं। Lumos. बहुत सारी चीजें लूमोस से भी दिखती ना। प्रोफेसर फिक का लेटर ये। Apologies for the delay in my response. I still receiving a good deal of Karaja introduction to the non-residents of ठीक है। क्विडिच मैच का है। अच्छा ये Revelio. ना ये वाला क्यों खुला है? इसके लिए लेवल 2 लॉक लगेगा। लेवल 2 अलाउ होना चाहिए क्या? मे बी। तो इसके लिए एक काम करो ना, जब लेवल 2 अलाउ होना चाहिए ही तो मेरे पास टैलेंट तो बहुत पड़े ना। मैंने क्योंकि बहुत कभी यूज़ ही कहाँ किए अभी। स्पेल्स डिपल्स ये क्या है? ये कोर सक्सेसफुल। नहीं चलो नहीं सीख सकते अभी। यहाँ से निकल लो। डिसइल्यूजनमेंट स्पेल है अभी अपने यूज। ठीक है। कास्टिंग रेवैल्यू रिवील्स अथॉरिटी फिगर्स इन एनिमी लोकेशन अलाउइंग यू टू स्काउट। ओके ये तो मुझे पता था। इसमें आपने नया क्या बताया?
Okay, Madam Weasley. The Hogwarts House of Help and keeping them regarding keeps friend from the capacity of chief है ठीक है समझ गया Revelio. पितृदेव भवा कौन सा था भाई वो Aloha Mora. I think it's good now. Caught you sneaking about, didn't I? हपल फप का लौंडा ये ज्यादा ही बोल रहा है इसने पकड़ लिया मेरे को कोई नहीं हाँ सॉरी make me so hard भाई ये फिर से करना पड़ेगा कि ये सब Revelio. इतनी प्रोग्रेस जो भी करी थी मैंने नहीं नहीं करना पड़ेगा नाइस थैंक्स सो शायद यहाँ पे कुछ था ना हाँ ये ओपन है ओपन है ओपन है नाइस अरे ये बकचोदी नहीं बकचोदी नहीं Being a ghost. Yeah, ghost of If your I can't love. just rely on imposters, are we? इसकी तो इसका गेम बजाना पड़ेगा रुको 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 इसमें अपन वो पेट्रीफाई वाला कौन सा था पितृदेव भवा बोलती क्या बोलती निरस्त भवा यो ये हर बार नहीं बताना रहता यार Aloha Mora. चलो भाई हो गया The faculty tower caught you sneaking about, didn't कैसे पकड़ लेता यार ये और क्या करूं मैं कैबेज फेंकूं के इसके ऊपर
12th वाले मिशन बहुत बेकार हैं यार इसके। अब बहन जी यहाँ रुक गया ये। हाँ ठीक है। Hello, Hamora. चलो इस बार बच गए अपन। ये कौन कौन मैसेज भेज रहा है? इतने सारे मैसेज क्यों बता रहा है भाई? आई होप थिंग्स आर विथ लव एम माय डार्लिंग अब्राहम। Revelio. हमें इधर जाना ही नहीं था, हमें यहाँ जाना था। अच्छा हाँ, ठीक है। अरे मेरे पास स्प्रिंट भी का ऑप्शन भी Getting था। along this year. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes, well. It's still early. Say that every year, Matilda. पकड़ लिए साहब ने। वो एक पेज लेने के चक्कर में पकड़ाया हूँ मैं, बताओ। चीजें फिर से तो लेनी नहीं पड़ती होंगी यार इस गेम में। तो मैंने वो पेज ले लिया, फिर से लेने Expelliarmus. सेंस थोड़ी है। Careful! Things will soon go to pot if I'm put out of commission. अरे सर, आप क्यों रुक जाते हो यहाँ पे? मुझे समझ ही नहीं आता। चॉकलेट रखी उधर, हर बार खाता हूँ मैं वो चॉकलेट। अरे वो कहाँ गए अपने शाप? और वो लेवल 3 लाख लगा है इसमें। हाँ। इजी था, मैं बस इधर उधर भटक रहा था ना, तो वो मर रहा था। अपन इसको कौन सा यूज करते I हैं? wouldn't. You are to be remanded at once. मेरे को हर कोई क्यों पकड़ रहा है? बहुत बेकार, बहुत ही बेकार खेल रहा हूँ भाई मैं। नहीं अब सीरियस हो जा रहा हूँ। अब मैं हर कहीं नहीं भागूंगा। मेरी मूर्ति अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। ओए आस्था। मेरे पास वो इनविजिबिलिटी वाला पोशन है क्या?
अरे ऐसा कुछ होना था ना, इधर ही के इधर बन जाए, उसके लिए रूम ऑफ रिक्वायरमेंट जाना पड़ रहा है ना। इन्होंने वो सही नहीं किया वो वाला काम। चलो आराम आराम से निकल लेते हैं। Revelio. Boris the way. This must be the prefect's bathroom. ठीक है भाई। Aloha Mora. अरे हर जगह लोमोरा लगा के रखा है, लगाना पड़ रहा है अपने को। ठीक है भाई, खुल गया खुल गया। अच्छा कुछ मिला। अरे इसकी How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. That's it. 50 health points. चलो एक तो हो गया, अब एक को लेके आना अपने को। हॉस्पिटल विंग वाला जो है, तो उसके लिए कहाँ से, यहाँ से जाना पड़ेगा। Is that how the faculty tower would be most improper? पकड़ लिया यार ने। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। इतना अच्छा उनको मस्त यार चखमा दे रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। विधि का विधान है, उसे कौन बदल सकता है भाई। जो होना है होके ही रहता है, समझ रहे हो ना। चलो अगले। अपने को बस वो हॉस्पिटल विंग का निकालना है ना। That had अबे इसने पास से पकड़ लिया वे। मैं एकदम उसके सामने से भाग के भी तो जा रहा था। पर इनविजिबिलिटी पोशन का मतलब ही क्या रहा फिर, जब तुम ऐसे इनविजिबल स्पेल का मतलब ही क्या रहा कि तुम जब ऐसे पकड़ा रहे हो तो जादुई चोगा ले लेते भाई वो लोग के चलो अब दिख जाए मुझे वो। इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा, ये आएगा ना। ऊपर जा रहा है। मैंने तेरे लिए इतना अच्छा प्रबंध किया था। चलो ये फील्ड गाइड तो मिला अपने को। इसी के साथ ये मूर्ति गायब कर दी हमने। रुको, ये अभी भी इधर ही है। मुझे जाना है लेफ्ट साइड। ये इधर जाएगा, देखने है ना। Hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my way. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season.
कि गलती से मैं उधर पर्दे पे मारा तो बैट पे लग गया वो, तो उनका ध्यान यही चला गया। कोई नहीं कोई नहीं, अब तो इतनी इजी इस मिशन में, अरे इतने ट्राई ले रहा हूँ मैं, बताओ कुछ नहीं है इसमें जबकि। चलो अब अपन Lumos. अरे लूमोस कहाँ जला रहा है भाई तू, ये ले डिsillusionment। अब चलते ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लौंडा होगा, ये वाला। तू इधर आ भाई, मूर्ति के पास। ऊपर क्यों जाता है वे? ओए पागल है क्या? वो डर गया वो मूर्तियों से, उसे लग रहा है भूत मूत आ गया। चल उधर जा, उधर देखने जा। अबे इधर नीचे बता। I wouldn't be a prefect if I didn't enforce the rules. देख लिया उसने मेरे को, है ना? बच गया बल गया। ओए ऊपर जाता है, मैं पेंटिंग हिलाता हूँ तो। हाँ यहाँ मारता हूँ तो हाँ अब हो जाएगा। वो ऊपर नहीं जाना बस तो। अब मैं भाग ले रहा हूँ। You can't imitate Professor Black's best, but I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. वे इनसे कैसे हट? इनको निरस्त भवा कर दूं क्या मैं? कौन सा था ये? चलो गए तो उधर ही है। Flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention. Is there ever is? I suppose you should. प्रोफेसर गार्लिक आप भी जाइए कृपया कर। हो बच गए भाई, क्या बचाऊं मैं उनसे? ठीक है जान दो। रिटर्न टू द डेमी गाइस मूव्स टू ब्लड। Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. बुलौंडा कहाँ गया यहाँ का? पेंटिंग देख रहा है वो। प्रोफेसर गार्लिक अच्छी देखने मिल गई मुझे। आहा व्हाट अ व्यू ब्रो, व्हाट अ व्यू। नाइस कीप गोइंग मैम। मैम की लेकिन चाल थोड़ी अलग है यार। वेरी नाइस। जितना भी टाइम यहाँ वेस्ट हुआ है ना सब वसूल हो गया भाई। प्रोफेसर गार्लिक जो देखने मिली हमें। अरे इसको कैसे ओपन करते हैं यार? पता है ऐसा कुछ इसका है कि यहाँ पे से जो तुम रोल करोगे ना उनमें से एक से खुलेगा है। देखो गलती से एक हाथ से खुल जाए। हट वे
इसको सीखना पड़ेगा पूरा, कहीं से इसकी बुक मुक होगी। ओई घोस्ट, नाइस। और नॉर्मल डे एट हॉगवर्ट्स, नथिंग न्यू। ओई, हाउ आर यू? Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Hello, Oh, Mr. Moon. goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. I'm glad to have that. I have the time, but I make no promise. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Okay. How many statues are there? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. हाँ भाई चाहिए more power. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. I keep looking. Understood. I shall keep an eye out. ठीक है भाई, और इसी के साथ Oh, I knew you were ये the one वाला to ask मिशन for help. होता है अपना Keep complete. at it so we can solve this mystery. और एक कैट, ओए इसको पेट नहीं कर सकते क्या हम? कर तो सकते होंगे भाई। देखो खान अपने पास है, तो ब्रश और Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Okay, 20 क्लास ही लेनी है अपने को अगली। I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. चार क्वेश्चन मिल गए भाई एक साथ। अपने को इसने कौन सा वाला सिखाया था लॉन्डे ने? एक्सपेरियमस नहीं, ये वाला कन्फ्रिंगो। डार्क मैजिक ही है ना। इंसेंडियो, ये भी शायद इसने सिखाया था। इंसेंडियो भी क्या पता, इंसेंडियो तो फायर वाला था इसने। ये मस्त था लेकिन। तो अब हम करने वाले हैं क्या, सबसे पहले तो अपने चश्मे बदल लो। ये अच्छे चश्मा है, ये वाले हैंड वियर तो चले ही हैं। टोपी देख लो, ये टोपी उससे अच्छी है। नाइस। नेक वियर, ये देखो एक ये भी है, ये तो ऐसे ही है। ये दोनों एक जैसी हैं। ये 41 है, ये भी अच्छी है। ये 46 है, ये 42 है। ये जम तो गए इसमें ये, लेकिन ये वाली भी रखेंगे अब, क्योंकि ये ज़्यादा लेवल वाली है। क्लॉक नहीं मिले यार कोई सा अच्छा सा। ठीक है, अपने पास क्या क्या है आपको इसमें?
द एल्फ स्नैप, हाँ तो अपने को ये वाला जाना है. डीक वांट्स टू टीच मी हाउ टू यूज द नैपशैक टू रेस्क्यू मैजिकल बीस्ट. ठीक है तो यहीं चलते भाई. ट्रैक यही वाला, इसको मैप में लोकेट करो कहाँ है. मैजिकल बीस्ट अपने को टेम करने हैं बहुत सारे जितने हो सके. That was just hope. Wow. Accio! What are you up to now? I'm up to here. Wow. Revelio. यही कुछ है यार, नीचे वो बोल रहा है ये लोकेशन में, ये ऊपर है ना. रूम ऑफ रिक्वायरमेंट जाना था, ऐसे ही बोल देते, फास्ट ट्रैवल कर लेता मैं. डबल डबल लूट करना पड़ा. हाँ डी वैसे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में तो रहता है. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. ये वो है अपना न्यूट स्कैमेंडर का बैग, सूटकेस. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready. I'm ready to. I like to ask you about changing the room ambience. No. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. चलो अपने को कोई ये जगह दिखा रहा है. पोकीमोन जैसे पोकी बॉल के अंदर वो बल्ड रहता है ना, एक छोटा सा, क्या कहते हैं उससे, आस, वैसे ही कुछ. अभी तो अपने को 1-2 टेम करवाएगा वो, है ना. Hoy, Deke. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Puffskein है, जिनकी टंग थोड़ी वैसी रहती है. ये फीमेल है. We have arrived. ये देखो ये. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the poffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. ठीक है. Knapsack. T to hold. ये रहा अपना knapsack. इसमें सारा बीस्ट का काम कर ले रहा हूँ नीचे वाले में. ठीक है, तो ये पफ स्किन्स इनको अपन टेम करना है. रुको. ओई पफी, वेट हियर.
हाँ तो इसके लिए हमें क्लोज जाना है। एक काम करते ना, डिसइल्यूजनमेंट स्पेल का यूज करते तो वो देख ही नहीं पाएंगे हमें। आजा ये You got one. अरे अरे ब्रो, अरे कहाँ, रुको। You got another one. बेटा 4-5 तो मैं जोड़ ही लूंगा। नहीं, 2 बढ़िया यार। एक मेल एक फीमेल करवा लेते तो थोड़ी उनकी हाइब्रिडिंग कर लेंगे ना। क्या सारे पफ स्किन फीमेल ही रहते हैं क्या? नहीं, ये लौंडा मेल है यार, ये मेल वाला चाहिए अपने को। एक रुको रुको, रुक जा भाई। अरे रुक जा बेटा, देखो मैं पार्टनर, ये तू तो फीमेल, तेरा कुछ काम नहीं, तू भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। ये कौन सा है? अरे ये है मेल, ये बहुत घूम रहा है। रुक 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 जा, तेरी शादी करा रहे हैं बे, पागल, भाग क्यों रहा है? Professor Howard will never believe this. चलो भाई, डीक। I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Flying beast अपने को भी चाहिए। Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. Beast. But we must be careful. West, sorry. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. ठीक है भाई। तो मीट द डीक नियर, एक जॉबल नॉक करके एक जगह है जहाँ पे हमें वो उड़ने वाले पक्षी मिलेंगे। क्या नाम रहता है उनका? जोबन नॉल। ठीक है भाई, अपन अपनी ब्रूम निकालते और चलते हूँ। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ज़्यादा दूर नहीं है, 300 मीटर ही दूर है। ये देख लो, क्विडिच ग्राउंड देख लो जब तक तुम, हैरी हॉगवर्ट्स देख लो अपना। छोटा लगता है ऐसे में तो हॉगवर्ट्स, दूर से देखो तो। लेकिन जब उधर खड़े रहो ना तब पता चलता है कि नहीं भाई। ओह, यही वाले उड़ने वाले पक्षी, यही बोल रहा है क्या तू? जॉबरनॉल। हाँ भाई, डीक बोलो। Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. ठीक है। What would it like to working for a poacher? What if I can't find any beasts? What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. इससे सारे थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते भाई, ये बाद में काम पड़ते हैं। Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. ठीक है भाई, लेवियोसो मतलब अपन उस ट्रे में कर लेंगे। Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Okay, Deke. Just wait. मैं बस यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा लेवियोसा? ब्रिगेडियम लेवियोसा। लेवियोसा रखूँ यहाँ कि ब्रिगेडियम लेवियोसा रखूँ? अभी मैं ब्रिगेडियम लेवियोसा ही रखता हूँ।
Wingardium Leviosa. अरे ये तो भाग गया यार, क्यों भाई? इतना बुरा लगता हूँ मैं। तो एकदम आराम से जाके पकड़ ले रहा हूँ ना मैं। एक मेल एक फीमेल पकड़ेंगे, ठीक है? No, you don't. अरे यार वो भाग गया, नहीं पकड़ा पाया मुझसे। अब जाओ, मैं इनकी ताक में बैठा रह रहा हूँ ना। डिसइल्यूजनमेंट। हाँ रुक जाओ, परफेक्ट टाइमिंग। आई थिंक लेवियोसा से ही होगा, विंगार्डियम लेवियोसा इससे नहीं होगा। ठीक है भाई, रुक जा रुक जा। ये कौन सा था? मेल था फीमेल था? या मेल था आई थिंक। हाँ मेल था। एक फीमेल है और कर लेते, ठीक है? जाओ, उसके लिए पहले तो मुझे डिसइल्यूजनमेंट देखना पड़ेगा। ये है क्या? अरे रुक जा गधे बेटा। हाँ रुक जा। नो बी स्टार। अरे यार इसकी चलो ये दो भी बहुत हैं। Everything's all right now. Okay, Dick. Do you have any dick? I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. चलो एक और है, कौन सा? एक और यहाँ पे है, कौन सा? मून काफ करके। मून काफ सुनते सी ऐसा लग रहा है कोई भेड़िया मीडिया टाइप होगा। इसको भी यार ये मेरे को मेल लग रहा है। रुको जा मेल, तेरी बहुत जरूरत है। Do cooperate, won't you? चलो रहने दो। Meet Deke near the forest. Oi, Deke. Nice to see you, my young friend. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did he come to... How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts.
Deke's friends were not as fortunate. I'll rescue I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Okay, Deke. वेट करना है हमें उसके लिए. रात को ही मिलते बोल तो रहा था यार ये. जैसे क्या ये तो डियर है वे. मून काफ तो रात को दिखते हैं ना. चलो ठीक है, तो मैं रात का इंतज़ार कर लेता हूँ भाई. यहाँ पे F2 वेट. यप. भाई रात. वो भाग गए मेरे को देख के. ये क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ देखो भाई, एक ही मेल दिख रहा है मेरे को. ये नर दिख रहा है. नर. ओए नर, रुक जा नर. तेरी बहुत ज़रूरत है नर हमें. तू ही तो वंश को आगे बढ़ाएगा. और एक मादा देखते. Settle yourself. I mean you no harm. ठीक है मादा. भाग गया यार ये. You make me so hard. अरे यार ये तो गलत किया यार इनने. मादा भागती है, शर्माती है मादा. ये रही मादा. अब अच्छे से कोऑपरेट कर ले. चलो नर और मादा दोनों ले लिए हमने. इनका प्रजनन करवा सकते हैं हम. चलो डीक. अरे अब तेरी जरूरत नहीं है मादा. ओके डीक. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. ठीक है भाई, समझ गया मैं. रिटर्न टू द रूम ऑफ रिक्वायरमेंट. चलो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट चलते हैं अब, क्योंकि हमारे जितने भी बीस्ट हमने ये टेम किए हैं ना, वो सारे के सारे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ही रहेंगे. ठीक है, तो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट जाने के लिए यहाँ जाके और ये देखो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट हम पहुँच जाते हैं सीधा, क्योंकि रूम ऑफ रिक्वायरमेंट का दरवाज़ा मिलना बहुत मुश्किल है. चलो आ गए. Deke thinks you should be proud. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. हाँ, नया होम भाई. But, कोई वॉल्यूम टाइप की जगह है क्या? to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Okay. एक जगह चाहिए भाई हमें. एक ऐसी जगह जहाँ वो रह सकें. पॉकेट डायमेंशन पूरा. हाँ ये सही है. What exactly did you think of? लेकिन ये बहुत छोटा है यार. अरे ना. मैं भी यही सोचा था थोड़ा बड़ा हो गया. तो इसके अंदर पूरा मस्त हरा भरा माहौल रहे. पेड़ पौधे रहे. Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Nice, देख लो जैसा सोचा था वैसा ही रहा ना. Room bit provide everything. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home.
ओके, प्रेस H to open the beast magnum. ओके, इतने सारे बीस्ट हैं देखो। एक पफ स्किन में ये मेल है, ये फीमेल है, एक और मेल है। ये जोबरनॉल एक मेल है और एक फीमेल। अरे वाह, ये भी मेल है एक फीमेल है। ठीक है, एक ये, एक पफ स्किन, भाई ये फीमेल्स की कोई जगह नहीं क्या? अभी हम मेल ही मेल को कर रहे हैं ना। ये मस्त था यार, ये बहुत सही उड़ा। खुश है भाई तुम तीनों? खुश हो? अरे बहन चो, कहाँ से कहाँ उठा के डाल दिया हमें तुमने। जंगल में मस्त जीवन चल रहा था, खाली खाली जगह डाल दिए। But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. ठीक है। Now collect a juggernaut feather. इसके puffskin fur, इससे हम puffskin fur निकाल सकते हैं ना। अच्छा, अरे रुक जा भाई, कैसे निकालना? कैसे ब्रश वगैरह करना है बोल रहा है? ले ब्रश कर लेते। हो जा, खुश हो जा। खाना खाएगी? ले खा ले थोड़ा। हाँ, इसने दे दिया हमें पफस्किन फर, है ना? ये मिल गई पफस्किन फर। सेम है, सही इसको करना है। Deke thinks you are doing good work here. नाइस। थोड़ा ब्रश फेर दो, थोड़ा खाना खा दो, खिला दो, तो बेचारे जानवर अपने आप अपने को वो दे देते हैं जो अपने को चाहिए। कितने भोले होते हैं। अरे ये इंसान मादर चोद, ये उनका प्रजनन करवा रहा जबरदस्ती है। अरे रुक जा ब्रो, रुक जा। ये थोड़ा खाना भी खा ले प्लीज, है। अब मुझे वो पफ्स वो दे दे तेरी फेदर, धन्यवाद। मिल गया भी डीक हमको। ये 3 चीज भी यहीं भेज देते हम। ये सब हमने यहीं भेज दिए। चलो अब तुम, ये तुम नर और मादा दोनों मस्त, ठीक है? मैं नहीं देख रहा, ठीक है? तुम जो करना है तुम्हें, मैं बस इससे बात कर रहा हूँ। खेलो खेलो कूदो। I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Enchanted loom. Exit the vivarium.
मस्त, देखो पॉकेट डायमेंशन। चलो भाई मेरे पेड़ पौधे भी बन गए ना। कॉन्जन एन इंचांटेड लूम, ठीक है। इंचांटेड लूम कंजर करना है हमें, तो नंबर 3 यहाँ। लूम 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 लूम, ये रहा। यूटिलिटी डेक्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, a dresser which can identify and one piece of gear and their properties। चलो इसको कौन सा कलर कर देते हैं अपन। भाई लूम है तो थोड़ा उसको, अरे हर कोई सा कर देते यार, इतना भी क्या सोचना। Add a trait to an item of clothing, okay। Insufficient to conjure this item, why? अच्छा मूनस्टोन चाहिए इसके लिए हमें ना, बहुत सारे। हो तो क्या, ये तो हमारे पास मूनस्टोन। एक डेक्स ऑफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना ही देते हैं। थोड़ा कृपया कर आप ऐसे रहिए, ठीक है। तो इसमें हमें I don't have anything for this at the moment. हाँ क्यों नहीं है भाई हमारे पास, हमने बेस्ट तो दिया जो भी था आइडेंटिफाई। हाँ चलो ठीक है, इन सब चीज़ों में नहीं लगना। लूम से करना अपने को। ऐड अ ट्रेट टू एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, ओके। नाउ बीस्ट कैन बी रेस्क्यूड, नॉट ऐड अ ट्रेट। तो अपन अपनी टोपी को इसको अपग्रेड करते हैं। ओके इसको अपन थोड़ा सा डिफेंस दे सकते हैं ना। नाइस, ऐड अ ट्रेट टू एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग। एक इसको भी रख लेते हैं, ओके। Came out nicely. I should show Deke. Tell Deke you have used the enchanted loom. Oh, Deke, I've used it. I'd like to ask you about the changing the name. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Does the loom work with all clothing? Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you, Deke. Thank you for your help, Deke. चलो भाई, बहुत बड़ा वाला अपन ने कोशिश कर लिया है। Nothing to identify, for now at least. चलो। नो नो नो, ओहो। भाई तुमने अपने को थोड़े खानदान बढ़ाया कि नहीं? क्या पफस्किन? नहीं इतने जल्दी थोड़ी बढ़ेगा है ना। एक काम करते, ये एक मेल है एक फीमेल है, एक इसको अपन बेच देते हैं। सामान करो इसको। ओए क्या नाम है तेरा? तू आजा बैग में घुस जा।
देखो भेजने जा रहे हैं हम। Sorry. I'm not going to hurt you. I am going to hurt you. अरे भाई चुटकू, ये कितनी प्यारी नजरों से देख रहा है, जादू वाली निगाहें इसकी है। मत देख भाई इतने प्यारे से, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूँ इसके बाद। नहीं मारूंगा, चल देखो नहीं मार रहा, इसको भी नहीं मारेंगे, ये भी प्यारा है बेचारा। उनको मारेंगे नहीं हम, उसको बेच देंगे, दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। वो भाई ये कहाँ तक जा सकते हैं हम इसमें? अच्छी खासी जगह है। यहाँ के मुंह मिल गया हमें ये। यहाँ पे एक छोटी सी केव भी है जहाँ रह सकते हैं। मस्त है, चलो और ज़्यादा फालतू हम नहीं घूमेंगे। एक बार मैं यहाँ और देख लूँ क्या है। लेक है लेक। अरे शराब तो तैर ही नहीं पा रहा। बस इतनी तक था, इतना ही एरिया है। रुक जा भाई, ऊपर चढ़ जा भाई। चलो गाइस, तुम यहाँ पे खेलो कूदो, मैं आ रहा हूँ। आल्टर कर सकते हैं क्या हम? बोटेनिकल सेंट्रल फॉल, हाँ यही तो करना चाह रहा था मैं। अब ना पूरा एकदम बोटेनिकल बन गया ये पूरा। ये देखो ये नाइस। चलो ठीक है, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट से निकलते। हाँ, और अपन दूसरे अभी कॉस्ट करते। ये तो हो गया भाई बहुत, 20-30 थोड़ी देखते रहेंगे। कुछ एक्शन दिखाओ। मिस सेबेस्टियन इन द पेल्ड क्रॉड। ठीक है, सेबेस्टियन से मिलना है कहाँ जाके? पेल्ड क्रॉड में जाके। टॉक टू एल्डाइन ओक्स। ठीक है, सेबेस्टियन है बहुत दूर है भाई। तो एक काम कर, मुझे बाहर छोड़ दो बस, तुम यहाँ तक छोड़ दो। अब मैं खुद चल जाऊंगा झाड़ू लेके। सेबेस्टियन अपने को डार्क मैजिक सिखाता है, इकलौता बंदा है जो डार्क मैजिक जानता है हॉगवर्ट्स में, मतलब अभी अपनी पहचान में। तो वो अपने को वही सिखा सकता है वैसे। यो नाइस। ओहो, लाइट हाउस। यहाँ उतर सकते क्या हम? लैंडिंग इज अनअवेलेबल। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे कोस्ट बचे होंगे अभी। मिशंस
नहीं, सुबह होने वाली है लग रहा है ऐसा। तो ये ब्रूम में स्पीड लगवा भाई, स्पीड स्लो है तेरी, मतलब मुझे ही लगवानी पड़ेगी। मिस सेबेस्टियन, चलो भाई पहुंच निकाले हैं, बस नीचे देख ले। यहाँ कौन है? बैंडिट्स। ये फोड़ पे चलते हैं अपन, आ जाओ, मजा आता है इनको। नाइस, अब चलो मिलते सब ऐसे। ये हम नए इलाके में जा रहे हैं ना, फील्ड क्रॉफ्ट रीजन है, नया एरिया है भाई। ये तो हार्ट बना है ना, ये हार्ट बना है फील्ड में, हार्ट। ओके चलो भाई पहुंच गए यहाँ पे। अलोहमोरा यूज कर लेते, अलोहमोरा से लॉक खुल जाता है, देखो। एक बार ये और चालू कर देते ताकि इधर फास्ट। Not sure how I'd fare in a little place like this. के यहीं रहेगा ये अपना सेबेस्टियन, रात को मिलेगा है ना? नहीं You दोपहर, made it. थोड़े सुबह का टाइम। हाँ एकदम ही सुबह हो रही थी ना। और भाई सेबेस्टियन कैसे हो? Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. ठीक है भाई, इसकी सिस्टर है एन, जिसको ये शुरू से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. You know how to make a girl cry. Here we are. My sister should be just inside. तो ये इसका घर है, ये कौन सा एरिया हॉगवर्ट्स में? देखते
यार अच्छा इस साइड का एरिया है। एक बार हमें यहाँ पे नीटी के साथ इतनी फ्लाइट भी करी थी यहाँ से यहाँ तक। भाई यहाँ जा सकते हैं ना? ये एरिया बहुत लॉग लग रहा है। जा तो सकते हैं। रिवर डेल्टा है यहाँ, कुछ कुछ है। चल देखेंगे कभी जाके। लॉग्ड। हेलो। Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. चलो, I think हम एन में अकेले जाके बात कर सकते हैं, right? I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Revelio. A letter from this is my potion kit, not yours. Leave my things be. And अच्छा ये इसके लेटर्स ही लेटर हैं. A letter from Sebastian. Hogwarts isn't the same without you. Well, Sharp is still as foul, but you know what I mean. I hope you're feeling better, Sebastian. मतलब सेबेस्टियन के बेचारा अपनी बहन की बहुत वो रहती है यार, बीमार है. कोई बात Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I can try. Sebastian made up his mind. I can try. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Always a pleasure. I wish you well. ठीक है भाई, समझ गया. अब सोलोमन से जाके बात करनी है. Uncle Solomon. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Surely there's something. Surely there is something. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir.
Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Hope could be a good thing. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. ठीक है भाई. दोनों से बात कर ली, एन से भी, अंकल सोलोमन से भी. अब सेबेस्टियन को जाके बताना है. बेटा होप मत छोड़ना. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? May I, sir? What sort of item do you support? What do you have for sale? तेरे से मुझे बस. What are we in the market for today? अच्छा, इसको ये फार्मर बेच सकते हैं हम. भाई मैं तो ये बेचने आया हूँ तेरे पास, ठीक है? ले ले तू मेरे से फटफट. ये फालतू मेरा इन्वेंटरी बढ़ रहा है. थोड़े मेरे को पैसे दे दे. Talk to the Sebastian. First, hello, Sebastian. Why will he not listen to me? She's my sister. Why तेरी सुनेगा वो? How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. He's trying to do what's right. He was out of line. He was out of line. There may be some... I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see, whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. चलो भाई सेबेस्टियन बताओ कहाँ चलना है. ले जा. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. अच्छा उधर पे. This way. झाड़ू का यूज नहीं कर सकते हम. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Oi! Stop it! Put me down! भाई साहब. I will make you pay. रुक जा. गुटकी पी ले गुटकी. Let's get this over with. अरे ये तो बहुत बुरा मारा भाई इसने. गुटकी भी खत्म हो गई शायद मेरी. Protego! Places! That was unexpected.
बेटे ज्यादा होशियारी नहीं इधर। Protego! Stupefy. Expelliarmus! Confringo! Nice. ये सब ले लूं मैं। You've made your last mistake. Really? आगे? I'll bury you in the deep. हैंग हो गया था भाई ये तो। आगे का डायलॉग भूल रहा था। Impressed? Rependo. I hate you. I know who you're playing with. How childish. Put me down. Confringo! No! Such arrogance. इस साइड में भी यूज कर सकते हैं बेटा हम। हल्के में ले रहे हैं। Let's just get this over with. Protego! Confringo! अरे यार पीछे से बार करता है। There you are. Confringo! अरे एक तो जमाए। Coming back this way. Are you sure? I won't rest. Confringo! Expelliarmus! गुटकियाँ पूरी खत्म करवा दी इनने मेरी। बिग एंड वेल्ड पोशन मतलब गुटकी है। Confringo! Kill spells glanced off of me. Places! Confringo! I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio! Bro, सब ले लिया ना मैंने जो भी उन्होंने मरते टाइम छोड़ा था। ओ अभी तो और आगे भी है ना। Hello, Sebastian. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. They killed for no reason. They were trying to hide something. They were trying to... It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio!
Search for the clues. ये क्या है? I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. चलो अब हाउस को ढूंढते हैं, शायद वहाँ कुछ क्लू मिलना है। Revelio. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Lumos. मेरे को लगा था लूमोस से कुछ होगा। Revelio. ये क्या है? This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. हाँ ये उस सपने में उसकी मेमोरी में देखा था। वो जो लड़की नहीं थी वो पहले जो मतलब जो 5th ईयर में वो भी ट्रांसफ़र हुई थी। अरे यार उनका नाम भूल गया मैं। पुरानी मतलब जब ये जो एंशिएंट मैजिक देख पाते थे जो लोग। Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. No, the keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Ah, ये भी है. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? मैं यहाँ भी चेक करूँ कुछ है तो नहीं. Revelio. ओके यहाँ पे उसी हाउस में कुछ है वो बोल रहा है सेबेस्टियन. अच्छा ये है. Depulso. Huh, a stairwell. Oi. Why Revelio. A stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. रुक जाओ Lumos. Lumos. Isidora Morgan's journal. It is my second week in the camp. More arrive each day. The Mughal doctor and even some of our own healers are doing all they can for them. The grief is palpable. The ones who have survived the plague are forever damaged by their loss. A fever may pass, the skin may mend, the scar, but the dust all remains. A sorry man, much like my father, who had lost a child. I can bear it. I long to give him some sort of relief. अब मैं फैज जैसा पढ़ रहा हूँ थोड़ा. I'm beginning to think that the other are wrong. I have the power to have the souls. It seems arbitrary not to have them, as it would be to rid them of their torment. Gee, okay, Ru. Okay, Euphoria. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this.
Second journal entry. The traveler here to learn, but I long to help. My internal struggle is overwhelming. It's a thought that the magic wants to heal, and I am one preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forget and regret not having done more? I cannot look into their eyes, knowing that I could lessen the burden of life. I saw the man leaving camp today, the one who so reminded me of my father. Surely it wouldn't have to help me. I couldn't further my research, of course, but that would be a fall. Virtuous consequence of doing something good fit to set already. Seems these journal entries are from Isadora's travels. और क्या है यहाँ पे? Repulsor use कर सकते हैं? Repulsor! Revelio! यहाँ पे और कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे. Repulsor! Okay, गिरी बस. Nice. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Lumos. यहाँ से हम दूसरे उसमें जा सकते हैं ना पहले, लेकिन सेबेस्टियन को समझाना पड़ेगा. देखो I know it सेबेस्टियन. sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Enter the Undercroft. Ominous will be. ठीक है भाई. इज़िडोरा का जनरल था पूरा वो. अभी जिसमें 7 पेजेस हैं, अभी 2 मिले हैं हमें, 5 और बचे. नया क्या है? Okay. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ancient magic. Yeah. यहाँ पे मैप है ये किसी प्रकार का. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. किस चीज का नोट है ये? दिख तो थोड़ा एंशिएंट मैजिक का सिंबल लग रहा है ये. Anything helpful in the note? और क्या यहाँ? Revelio. तो अपना अंडरक्रॉफ्ट ही है बस. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room?
No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. वैसे इनसे तो अच्छी बात है मैं छुपाया नहीं कुछ, नहीं तो वो बोलता भाई कि भाई एक तो मैं तेरे को डार्क मैजिक सिखा रहा हूँ। इन द शैडोज करके अपना जो क्वेस्ट था कंप्लीट होता है। सेबेस्टियन और सिस्टर का थोड़ा सा तो अपने को पता चला। ओके क्या नाम था इसका, क्वेस्ट का नाम क्या था? इन द शैडोज ऑफ अंडरक्राफ्ट अंडर नहीं अंडरक्राफ्ट। Meet me near the ruins of Felbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. नेटी ने ऑल भेजा है भाई, रून्स को बुला रही हैं भाई। हम मुझे नहीं जाना भाई नेटी। मैं प्रोफेसर गार्लिक के लिए कमिटेड हूँ नेटी, तो कृपया मुझ पर ट्राई ना करें। नहीं जाना तो पड़ेगा, वो दोस्ती के हिसाब से बुला रही है। चलते भाई, मीटिंग एट द रूम्स। ओके नेटी से मिल लेते भाई जाके। सेबेस्टियन वाले को सही रहते हैं भाई, उसकी सिस्टर की स्टोरी अच्छी चलती है, वो डार्क मैजिक सिखाता है, मस्त जोक मारता है, और दोनों की फ्रेंडशिप भी अच्छी है। दोनों स्लिदरीन के हैं, अपना गेराल्ट ऑफ रिविया और वो कह रहे ने। You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. ठीक है समझ गया, नेटी यहीं होगी। Astronomy classes, right? And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Yeah. जोकर बन के आया है भाई पूरा। Ladies, Professor Shah. Astronomy Professor is Shah. not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Indian accent यार। Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, ये वो हॉलीवुड वाला you इंडियन just एक्सेंट है। might catch a glimpse. उन्हें ऐसा लगता है अपन ऐसे With that बोलते in हैं। mind, please take your telescopes. With that in mind, Tonight please we will take be your on the telescope. observation deck. ये बिग बैंग थ्योरी में बेचारे राज को भी ऐसी वॉइस दी थी, और हॉवर्ड ऐसे ही मजाक उड़ाता था। कब सुधरेंगे भाई ये बेस्ट वाले? ऐसे नहीं बोलते भाई हम इंग्लिश। Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. थक्कर नाम है, थकान नहीं। मैं ठक्कर नाम है इस I लौंडे can का। adjust that for No, you. no, bring it into focus अरे। on your own. भाई किसने किया है कैरेक्टर ऐड यार? इसकी डबिंग किसने की है यार? ब्रिंग इट इनटू फोकस। ऐसे नहीं बोलते भाई हम लोग यार। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। ओके मेरे को दिख गया भाई, ये यही देखना था ना। Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? ठीक है। Dismissed. सब ठुटर गए। You wait here, अपने सब बोलेगी। Hello! I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit.
It's nice to meet you. नहीं अमित. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. चलो इसका तो थोड़ा एक्सेंट उन्होंने सही किया है. ये शायद वो ब्रिटिश इंडियन टाइप होगा. ऑब्वियसली बच्चा है तो इसके पेरेंट्स ये तो रहा ही ब्रिटिश में, ब्रिटेन में होगा अंदर वगैरह. थैंक यू. हाउ काइंड. I can't take your telescope. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I फिर ठीक है. finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. ठीक है भाई. Find Amit's telescope in the storage area. Stargazing as long as I could. Okay. Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Not sure what you can learn from these astronomy tables. Amit thinks he knows everything. Amit Even thinks- told me he can speak gobbledygook. Sounded... The constellations are beautiful. Not sure they're worth dying of a cold for, but they are beautiful. Okay, storage area ये है. डन है. यहाँ से अमित की टेलीस्कोप लेनी है अपने को. ये क्या है भाई? अच्छा हाँ ये वो है ना वो. Confringo. Confringo लगाओ इसमें. कोई भी आग वाला वो लगाओ. This was his old telescope. मैं लगा ये चलो It's टेलीस्कोप. practically brand new. A pristine night for stargazing. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? I noticed you dismiss divination by. Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. चलो कोई नहीं भाई, कम से कम कोई इंडियन कैरेक्टर ऐड तो किए उन्होंने, इंडियन ओरिजिन का. You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. ठीक है भाई. Follow Amit to the lower deck. यहाँ हमें Amit मिलेगा टेलीस्कोप के The साथ. perfect night for... Oh, hello again. अरे आउल, देखो हम तेरी ले सक मतलब देखो हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं. नहीं, सिर्फ मैजिकल कैन बी रेस्ट. Hello Amit. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. So the telescopes came with a catch, and you like to finding it. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything.
But how do you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. ठीक है. Sound ऐसा. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? ठीक है भाई, चलते इसकी थोड़ी इच्छा पूरी कर दें. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. ठीक है भाई. जाओ चल, जल्दी जाओ जल्दी. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. चलो भाई. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Thakkar ji. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. What is this table? Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Castle wall के पास है, ठीक है. Why are you so fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. I mean, there is plenty to learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. Actually, that's all I wanted to know. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. यही होगा है ना. अबे बच गया मैं को लगा गिर जाऊंगा. A little foreboding. Revelio. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Cage bathtub. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. I think इसमें डिपल्स यूज कर पा रहे हैं अपन. नहीं जाना तो हम यही है. भाई ये कहाँ से ले जा रहा है. अरे ऊपर जाना है. क्या है यार ये. सही जा रहे थे. इनका ट्रैकिंग सिस्टम खराब है. गूगल मैप सही है अपना. आ जाओ ठक्कर जी. अमित जी आ जाइए आप. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking? Revelio. Oh no, not this close to school, Amit. Confringo. Look, there's Revelio. I think you should do the honors. Go on, try it out. ठीक है भाई, मैं ही कर ले रहा हूँ. क्या करना है टेबल को? टेबल पे टेलीस्कोप लगा के देखना है. The constellation should appear near the center of your view. W. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart.
ओके जमाना है इनको। जम गए। लेरिया लायरा। I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Memoirs. I look forward. Huh. If you so so. एक बार ही बोल दो. Huh. If you say so. ये बोल दे. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Amit नहीं, Amit. Amit में डबल ए होता भाई, Amit. इनका भी एक्सेंट बेकार है. इन लोगों का ही. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Oh. चलो भाई, तो ये हो गया भाई अपना ये अमित ठक्कर जी के साथ. ठक्कर जी आप गायब हो जाइए, देखिए ना हमें. नहीं देखना भाई, तू सही लौंडा है. एस्ट्रोनॉमी से खा के जाएगा अपने को ये. अरे कुंजा भाई, क्या डर रहा है? तुम क्या ही होगा तेरा. रुक जा. चलो ठीक है. तो अपने पास कौन कौन से कॉस्ट हैं? मेन कॉस्ट बताओ हमारे. ठीक है, तो यहाँ पे अपने ख़त्म होते हैं भाई. ये हाई मीट नेटी आफ्टर डार्क. चलो अब नेटी से तो मिलना है जिस काम के लिए आए थे हम. नेटी एफ टू लोकेट ऑन मैप. अरे इतनी दूर कैसे जाऊंगा मैं? झाड़ू से? लेट्स गो. ओ भाई, हॉगवर्ट्स रात को सही दिखता है यार. कासलवेनिया. मीट नेटी नियर पैलवर्टन कासल. ठीक है, समझ गया. ऑक्समीड हियर आई कम. चलो थोड़े नीचे से चलते, थोड़ी वादियों के मजे लेते हुए, पेड़ों में टकराते हुए. Does it get any more cozy than Hogsmeade? ये दोनों लड़ रहे हैं. क्यों बे? जानवरों को मार के होशियार बनता है. होशियार बनेगा तू. One less poacher in the wizarding world. बेचारे जानवरों को मार दिया. चलो कोई बात नहीं, तूने हमारा काम ही आसान किया है. तू नहीं मारता तो हम मारते. मीट नेटी नियर फेयरवेलन कासल. ओके, इस कासल में हम आए कभी? देखो यहाँ तक तो मैं बहुत घूमा हूँ. आई थिंक है ना, यहाँ नहीं गया. हाँ, एक ये वाला कासल भी है जहाँ मैं जा चुका हूँ. रुको रुको, यहाँ नीचे क्या है? वो बुल्स हैं.
भाई बहुत बड़े अटैक करते हैं। तो ना ही लड़े तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? अभी ऐसा किया है अपन। Nice. Nice. अरे यहाँ पे कोई केव में है भाई, मैं फालतू भटक रहा हूँ, है ना? ओके, बस इतना ही था ये। निकला कुछ और भी देंगे यार। वो अच्छा, ये एज वाइंडर्स एग मिलते हैं यहाँ पे, उस काम में आएंगे अपने को। हाँ, चलो यार, नेटी वाला अपन बाद में ही करेंगे अभी, है ना? अभी चलो एक काम करते, कोई साइड क्वेस्ट कर लेते जब तक, जल्दी करें मतलब। और वैसे अपन ने बहुत सारे मेन मिशंस कर लिए जहाँ तक, ठीक है? ये थोड़ा क्लासेस वगैरह इन द शेडो ऑफ सेबेस्टियन। सेबेस्टियन से मिलते जाके, सही लौंडा है। I need somebody who can love me like my worst. No, I'm not perfect. Ravenclaw, Slytherin, सबके लोगों ने छापे हैं लोडिंग में। Speak with Sebastian. ओई, लाइक ये क्या, यहाँ कौन सा है भाई? ये कोई सा क्वेस्ट तो है यहाँ पे। प्रोफेसर ये मिलना चाह रहा है। अच्छा ये है, ये आर्थर है ना, ये गैरेथ बीजली। हाँ। Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Shouldn't do it. I can't wait to see what you brew up. Where do you find time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me.
Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeydukes? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Is this stealing? Can someone buy them for you? Couldn't you have someone buy the dried billywigs things? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Revelio! ये क्या भाई? लॉक यार ये तो अबे ये नहीं होता मेरे से कभी. और ये क्या है? 3 है. 5 6 7 नंबर पे कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे चिपकल ली है. चिपकल ली. अच्छा खोले. ओके. अभी क्या है? 1 5 6 6 नंबर पे क्या? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ये है. हट वे मिस नहीं बन रहा है. फाइंड द स्टेज विद द वन आई विच. Revelio. वन आई विच वाली स्टैचू फाइंड करना अपने को. हाँ ओ भाई ये तो बहुत नीचे तक जाते हैं. Revelio. मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा यार. This looks like the right statue. Now, what was the password? पासवर्ड तो था वो डिस करके कुछ था ना. Descendium. Descendium. हाँ. नाइस. सीक्रेट जगह जा रहे हैं हम. कहाँ अपन उससे मिलने आए थे? क्या कहते हैं अपने सेबेस्टियन से. वो कहाँ ये काम कर रहा है? Goodness. Who knew this was all down here? भाई साहब सीक्रेट पैसेज है ये तो. Revelio. पैसेज. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. लिफ्ट. Flipendo. अरे वो फ्लिपेंडो यूज कर रहा हूँ मैं. Compulso. Accio. कोई सा यूज नहीं हो रहा यार ये तो. Levioso. I need to fix the lift before I can use अरे it. रिपेयरो यूज करना.
Reparo. Reparo. भूल ही गया था मैं. That seems to have done the trick. Reparo का अब यूज पड़ा आधे गेम के बाद. This castle will never cease to surprise me. Revelio. यहाँ पे चेस्ट है भाई. अरे 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 अरे. Confringo. Confringo. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? अरे ये कुछ है तो ये. इसको कुछ एंसेड मैजिक तो दिख रहा है. क्या इसमें क्या यूज करना है? डिपल्सो. Reparo. अरे. Depulso. Accio. If I could lift this platform, I think I could get it to work. वही तो लिफ्ट कैसे करें हम? Levioso. ये रहेगा लेवियोसा में कब तक रहेगा ये? रहेगा थोड़ी देर तक तो रहेगा मेरे को लगा. I'm going to have to get past this. यहाँ क्या है? हाँ सीक्रेट चेस्ट. क्या बन से मिस हो जाती है अब भी. हालांकि मिस हो भी जाती तो कोई बड़ी बात होती नहीं. ओके वहाँ पे कुछ है वो. रिपेरो यूज करना. अरे रिपेरो कहाँ है? Reparo. Levioso. Reparo. Leviosa. अरे लेवियोसा यूज क्यों नहीं हुआ? मस्त था यार ये. इस साइड को तो सही में चाहिए था. Confringo. One more to go and I'll make it across. Something is getting in the way of that platform. उसको रिपेरो मारना भी पड़ेगा. Reparo. Levioso. वो क्या डिस्ट्रैक्ट?
उसको पता है डिपल्सो मारना पड़ेगा। अरे इसको ना अब क्या रिपेयरो भी कर दिया। मीन फ्लिपेंडो सही है। Levioso. That did the trick. ठीक है मजा आ गया। नाइस। नदी तो देखो कहाँ कहाँ से आ जाती है भाई ये। This must be the way. I need to find a way to open that gate. Okay. ये क्या है भाई? डार्क हेर्बोलॉजी स्लैग हैट। ठीक है यहाँ पे दोनों जगह Something smells sweet. It must be close to Honeydukes. Honeydukes. ओके Honeydukes कहाँ? हॉगवर्ट्स में वो हॉग्समीड्स। चलो भाई Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Honeydukes. I can smell the chocolate. और क्या चीज मिली भाई? भाई साहब देखो हैंडवियर तो शायद मुझे अच्छा वाला ही मिला है। हाँ मस्त हैंडवियर मिला है। फेस वियर में भी देखो अभी मैं ये वाला पहनूंगा ना। ये भी 38 है, ये भी 38 है। ये भी 38 है, ये 42 है। ये 4 आइड वाला फिर मिल गया। हाँ ये ठीक है। और ये 50 है। बिटवीन को इज अ गुड टाइम 25 न्यू ईयर। यही पहनते हैं। हाँ एकदम वाइट हैकर बन जाते वो। ये 51 है, 42 है, 41 कैसा है ये आर्मी टोपी ऐसी है, ये हैट ऐसा। ये तो अपन पहने ही थे। 41 मैं तो ठीक है। एक ये मिला अपने को है ना, ये डीमन स्लेयर वाली रखते हैं ना। ये थोड़ा कलर सही लग रहा है। क्लोक अच्छा मिल गया अपने। 30 था ये 30। ये इसके लिए अपने को क्या चाहिए? इक्कीस लेवल चाहिए ना। हाँ ये अच्छा लग रहा है थोड़ा। Revelio. I have the dried billywigs things. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out.
ours were attracted to treasure. I must have missed that one in Beasts. We return to Gareth. Revelio. Exploding bones. Level to lock. अरे वाह, उड़ने लगे एक कैंडी खा के था मैंने थोड़ी देर के लिए। Aloha Mora. अरे यार सब में यही नहीं करना पड़े यार। हर ताले में ऐसे ही करना पड़ता है। Revelio. New instruments are expensive. अरे यहीं तो है। भाई यहाँ पे एक पेटी दिख रही है, पर हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि अभी लॉक है। Revelio. यहाँ तो हम जा सकते होंगे। चलो गैरेज के पास जाना है वापस, है ना? Hogsmeade, here I come. Fast travel, let's fast travel, let's fast travel. ठीक है भाई, बहुत हो गया अपने को टाइम। अब गैरेज को देते और बंद करते स्ट्रीम वगैरह। बगल में गैरेज होना चाहिए भाई, नहीं तो दिमाग ख़राब ना हो मेरा ज़्यादा। कूद क्यों नहीं रहा यार ये? लाइब्रेरी में जो भी पढ़ रहा है सबको डिस्टर्ब कर दूंगा मैं। क्या है भाई? निकला कुछ है उसमें? ये Okay. Revelio.
ये इसमें कौन सा यूज करना रहता था? लेवियोसा। Levioso. लेवियोसा। ये ओए Gareth, ले भाई तेरा। Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them? Incredible. Here they are. All yours for a fee. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. ठीक है, पैसे दे दिया कर, फ्री में थोड़ी करने आए। क्विडिच बोर्ड करके कुछ मिलाया मैं। अरे चैलेंज कंप्लीटेड। ये अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। यही पहन ले रहा हूँ मैं। ये तो फिर भी ठीक है। अब कौन कौन से क्वेस्ट हैं? देखो मेन क्वेस्ट तो है ये, नेटी से मिलना है जाके। प्रोफेसर शार्प्स के 2 असाइनमेंट है, उसके लिए हमें इनविजिबिलिटी पोशन। अच्छा और ये क्या है? साइड क्वेस्ट में इन द शेडो ऑफ द ब्लड नाइट स्पीच विद सेबेस्टियन। और इस साइड क्वेस्ट ये है, कैच इन द कैसल, फाइंड द सेकंड लेवल फ्रॉम द आर्थर्स बैग। अल्लाह मोरा। और ये क्या है? टॉक टू एडिनॉक्स। ये वाला करते यार। हैव टू लोकेट ऑन मैप। अच्छा ये जगह है ना? ट्रेजर वाला जो भी था वो कर ही लेते। Loading screen. Find the second letter from. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? ओए क्या है भाई, तेरा क्या काम है? नेगली ऑक्सपायर, इससे बात करूंगा कुछ कुछ पकड़ा देगी। Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why don't you follow the keys? Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Why would a headmaster do so? Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. What you did in Cross Wands was fantastic. धन्यवाद बकर।
हम यहाँ आपका काम नहीं करना है अभी हमें कैच इन द castle. Dueling skills are quite advanced. This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Lumos, maybe? Lumos. Revelio. Compulso. Accio. There was a doorway hidden within the portrait. अरे वाह. I wonder what came of Arthur's search. Return to Arthur. ठीक है. यहाँ जाना है हमें ना. सबसे करीबी वाली वो कौन सी फ्लू यही है. Beat down baby. अब लेकिन बंद भाई. ये आर्थर वाला लास्ट क्वेस्ट था. बहुत साइड क्वेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा. I think I'll miss you. Really? I shan't miss you. What have you learned? If I could have a moment of your time. Arthur, ले भाई तेरा. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. चलो भाई. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office Sophia might yield Franklin. anything interesting. हेलो. ये भी क्वेस्ट पकड़ा देगी कोई सा. इससे बात करेंगे. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. बोलती आ रही तो. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. She sounds fascinating. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. And you're a 3rd year, so... Quick one. According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly are. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Okay. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Sophronia, could you remind me? Of course, if you... Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. ठीक है भाई. It does sound interesting. कुछ चीजें मिली अभी मेरे को. जैसे कि एक ये मिली थी. इससे अच्छी तो ये लग रही है ना. और ये भी ठीक है.
चलो ठीक है भाई, यहीं पे बंद करते हैं अपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, आज नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय, पीस आउट, सायोनारा।